ओके, मेरी आवाज आ रही है। आज कुछ थोड़ा इसमें कनेक्ट होने में टाइम लगा। यस सर। हेलो, यस सर। आवाज आ रही है मेरी? यस सर, अब आ रही है। अरे यार, अब पहले नहीं आ रही थी। सर पहले आई थी सर, बाद में नहीं आई, अब फिर से आ रही है सर। चलो ठीक है, फिर ये थोड़ा आज इसमें गड़बड़ लग रहा है मुझे कुछ। ओके, जरा कैमरा सभी ऑन करो फिर जल्दी से। सभी कैमरा ऑन करो जल्दी। रोल नंबर 29, 12, 14, 13 कैमरा ऑन करो भाई। मैंने बोला था ना पिछले, मुझे लगता है यूनिट सेकंड में था, हमें एक रिजल्ट मिस हो गया यूनिट सेकंड का ये। तो चलो आज हम ये करते हैं, छोटा सा रिजल्ट है वैसे। प्लीज जरा कैमरा ऑन करो ना प्लीज, ऑल ऑफ यू। अटेंडेंस है ना तुम्हारा? वो सीआर कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रहा है इतने दिनों से। उमर, आर यू देयर? कहाँ है तुम्हारा कैमरा? कहाँ है? ऑन करो ना। ऑन ही है सर। ओके, तो अटेंडेंस का ध्यान तुम रख रहे हो? यस सर, कल भी मैं आया था लेकिन आपने क्लास स्टार्ट की थी। अच्छा ठीक है। सो मैंने कहा था यूनिट सेकंड में हमारा एक छोटा सा रिजल्ट मिस हो गया था। सो लेट्स स्टार्ट दैट। लेट मी शेयर द स्क्रीन, फिर हम देखेंगे हम क्या करेंगे। ओके, ये लेट मी स्टार्ट। ये छोटा सा ही रिजल्ट था, लेकिन मुझे लगा कि ये इसमें होना चाहिए। यूनिट सेकंड को ये बिलोंग करता है, और वो ये है। एक्चुअली हम उससे थोड़ा सा क्या बोलते हैं, निकाल सकते हैं ना। हमने जो रिजल्ट एक किया था उसमें से इम्प्लाई भी होता है, लेकिन आई थॉट कि इट डिजर्व्ड अ सेपरेट प्लेस। वो ये है, given a continuous linear map between Banach spaces, now given T belonging to a bounded linear map collection of all bounded linear maps from X to Y, where X and Y, that's important क्योंकि वो वन वे प्रूफ होता है एक्चुअली, इसीलिए मुझे ये अलग से करना पड़ा। यानी अगर नॉर्मल लीनियर्स हो तो एक साइड से ये प्रूफ होगा, इफ एंड ओनली इफ नहीं आएगा तो मैं लिखने वाला हूँ नीचे। फर्स्ट, T is a homeomorphism if and only if T star is a homeomorphism. And you know T star is the conjugate of T. Second, T is an isometry if and only if T star is an isometry. Is an isometry. Of course, I will remind you, if T is a bounded linear map from X to Y, then we can define T star as a bounded linear map from Y star to X star by T star of Y star is equal to Y star composition T. So that's our definition of conjugate of T. तो हम कह रहे हैं कि अगर T होम्योमॉर्फिज्म है तो T स्टार भी होम्योमॉर्फिज्म है, प्रोवाइडेड X and Y are Banach spaces। और अगर T आइसोमेट्री है तो T स्टार भी, conjugate of T भी आइसोमेट्री होगा। तो एक में कर दूंगा, दूसरा चूंकि सिमिलर है तो वो तुम होम असाइनमेंट करोगे। Now suppose T is an homeomorphism,
T is a homeomorphism. Homeomorphism means a function that's a bijection and it's continuous, you know, and its inverse is also continuous. So अब हमें दिखाएंगे T star is also a homeomorphism. Now we know that T star, ये तो पता ही हमें, is a continuous linear map because it is composition of two continuous linear maps. Continuous linear map. पहले हम दिखाएंगे we show that T is 1-to-1. T star is 1-to-1. पहले दिखाएंगे T star is 1-to-1. उसके लिए क्या दिखाएंगे? Of course दिखाएंगे kernel contains only 0 because it's a linear map. अगर मैंने वो दिखा दिया, अगर kernel में खाली 0 vector है, then it has to be 1-1. Now suppose that y star belongs to kernel of T. Implies that, of course, sorry, kernel of T star. T में कहाँ होगा? It means that T star applied to y should be equal to 0. Now T star at y star belongs to x star, so it's a mapping. So a mapping is known by its action. It means that it's a 0 map. It means T star y star at x must be 0 for all x belonging to x. And by our definition of T star, it means that y star composed with y star of T of x must be equal to 0 for all x belonging to x. Now since T is an homeomorphism, so it must be a bijection. Now since by our assumption T is a homeomorphism, so it's a bijection. Since T is a bijection, by our assumption, being a homeomorphism, it implies therefore if y belongs to y, there exists x belonging to x such that T of x is equal to y, and it should be onto. Bijection है तो onto है T. तो अगर मैं इधर लाऊं तो Tx कोई ना कोई y है ना, I can replace it by y. It implies that y star at y is equal to 0 for all y belonging to y, which means that y star is the 0 map. तो हमने शुरू किया था कि y star kernel of T में है और हमें पता चला ये सिर्फ 0 map हो सकता है. So it means that kernel of T star is just the singleton 0, which implies that T star is indeed 1-to-1. पहला हिस्सा हमारा. दूसरा, to show that T star is onto, क्योंकि हमें दिखाना है bijection है. Let, अब तुम्हें याद है T star is a map from y star to x star. तो कोडोमेन में एक एलिमेंट लेते हैं, देखते हैं इसकी एक प्री इमेज है, दिखाते हैं इसकी एक प्री इमेज है. So let x star belong to x star, then for all x belonging to x, we have, तो हम यूज करेंगे कि T is a homeomorphism, उसका inverse exist करता है. I can write x star at x to be x star T inverse of T of x, because T inverse exist करता है और continuous map. Okay, but that can be written as by our इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x star of T inverse of T of x, right? But using the fact that ये जो ये है, this must belong to y star. Why? Because T inverse is a map from y to x, and I am applying, तो इस तरह से अगर मैं लिखूं y से x तक मुझे ले जाएगा T inverse, और फिर उसके बाद मैं लगा रहा हूँ x star, तो I would land up in k, right? So if I take this composition x star after T inverse, this is a map from y to k. Of course, if both are linear and continuous, therefore this is a bounded linear map. So this is a type of y star.
और हमें पता है y स्टार ऑफ t ऑफ x जो है वो बराबर है, इसके बराबर t स्टार, कैसे हम लिखते हैं मैं ही भूल गया, t स्टार एट y स्टार, ठीक है। सो इट इज t, अब t स्टार की जगह ये है ना, नहीं ये है t स्टार, ठीक है, ये y स्टार की जगह, तो इट शुड बी इक्वल टू t स्टार ऑफ x स्टार t इनवर्स applied to x for all x belonging to x। तो अगर ऐसा है, it means x star is the same map, action same है as t star t star of x star composed with t inverse, which where of course मैं ये लिखता हूँ where y star belongs to, oh sorry y star तो नहीं है लेकिन y star ही है, ये बड़े y star में belong करता है, जो कि हमने अभी इसके जरिए दिखाया। So where x star composed with t inverse belongs to this capital star. Okay, so what have we shown? We have found something, we picked something in the codomain and found its pre-image under, we found something in y star which is mapped to x star. So that means t star is on. So which implies that t star is indeed on. अब ये bijection t star is on. So far we have shown that it's a bijection. So by inverse mapping theorem or by open mapping theorem, now by open mapping theorem, what do I have? I have got a bijection between Banach spaces. अगर bijection है between Banach spaces तो उसका inverse भी continuous होता है, ये open mapping theorem की straightforward consequence। By open mapping theorem और कभी-कभी हम inverse mapping theorem भी लिखते हैं, t star inverse is continuous और t star तो होता ही continuous, hence मैं डायरेक्ट लिख सकता था t star is a bijection, a homeomorphism, sorry, homeomorphism। Okay, ये तो one side हो गया। Conversely assume that t star is a homeomorphism। T star is a homeomorphism, then उसका मतलब उसका inverse continuous है, then there exists C positive such that P inverse star of X star is less than equal to, in norm, is less than equal to C times norm of X star, right? For all X star belonging to, should I write it as, okay, X star। Now पहले तो मैं ये बताऊं, T star is a map from Y star to X star। So what does that mean? That means T star inverse जो है, it's a map from X star to Y star, ठीक है? Now what? तो इससे पहले हमने एक रिजल्ट किया था, उसको मैं यूज करना पड़ेगा एनीवेज। So it implies that, does it imply? अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि अगर इसका नॉर्म लेस देन इक्वल टू 1 है, या मैं इसको लिखूं, इसको कभी-कभी हम ऐसे लिखते भी हैं, इट्स एन इक्विवेलेंट वे ऑफ राइटिंग इट, दैट C इनवर्स, ध्यान से देखना, T स्टार इनवर्स ऑफ PX स्टार, या यहाँ C इनवर्स में दूसरे स्टेप में लिखेंगे, चलो, okay, is contained in C times, should I write it like this?
Okay, C times by star, right? ठीक है ना, कहने का मतलब अगर ये लेस देन इक्वल टू 1 है, यानी if, इसका मतलब क्या है, if norm of x star is less than equal to 1, then norm of t star inverse of x star, या कुछ नहीं है ऐसे, is less than equal to c into 1, एक तरह से, यानी वही मैंने लिखा in other words. This is equivalent this statement, which implies, और इसी को हम ऐसे लिखते हैं c inverse into t star inverse of bx star is contained in b, sorry, just a minute. Because t is a homeomorphism, I can put an inverse around, I can use it, yani c times bx star is contained in, यहाँ inverse आ जाएगा, t star of by star, एक ही बात है. So therefore, once I am done, so what do I have? I have assumed that T star is a homomorphism. I have to show that T is a homomorphism. यानी मुझे दिखाना है T is continuous. Hence, let me see if I can go with this argument. Conversely, अगर ऐसा है, तो इससे हमें क्या मिला? तो अभी हमें ये मिला. Okay, देखता हूँ मैं. Okay, I have to show that T is a homeomorphism. तो T star तो ऐसा होगा, लेकिन इससे हमें मिला क्या? हमें ये मिला, is contained in T star of मैंने इस पे कौन सा आर्गुमेंट लिया है? ओके, दिस तरह देखते हैं. दिस गिव्स मुझे टी चाहिए. टी स्टार से मैं टी कैसे जाऊंगा? वाया द वाई. टी स्टार से टी कैसे जाएंगे? जस्ट अ मिनट. टी स्टार से हम टी पे कैसे जाएंगे? हमें जाना होगा टी स्टार का कनेक्शन क्या है इसके साथ. नो इशू. So T star is a mapping from Y star to X star. So you have, and T is a mapping from X to Y, and T star at Y star is Y star composition T of X. Okay. So T star at Y star is this thing. So T star at Y star is this thing. So this is Y composition of T star of X. वही दिख रहा है. एक मिनट. एक्चुअली मेरे नोट्स भी ना होते हैं जिसको मैंने 10 जगह पे लिखा होता है. ओपन मैपिंग तो आ गया. Where did we do? Does it mean that अगर मैं x में कोई मैप लेता हूँ,
मैंने फिर कहीं और लिखा होगा। ओके, एक साइड तो हो गया टी स्टार होमोमॉर्फिज्म एंड वी हैड टू यूज बनक स्पेसेस। मुझे लगता है ये वाला सीधा होना चाहिए, ज्यादा इजी होना चाहिए कि अगर टी स्टार होमोमॉर्फिज्म है then T is a homomorphism. It should be easier. और इसके लिए शायद बानक स्पेस होना भी जरूरी नहीं होगा। एक मिनट जरा। एक्चुअली ये इतना इजी होगा इसलिए मैंने इसको नोट्स पे लिखना भी जरूरी नहीं समझा। और प्रॉब्लम ये है कि अब मुझे ही याद नहीं आ रहा। लिखना पड़ेगा इसमें। मुझे दिखाना है टी स्टार T inverse is continuous and T inverse is a map from y to x. T inverse is a map from y to x. ओके, मुझे लगता है टाइम लेगा लेकिन ये इतना इजी होगा कि मैंने इसको मेंशन भी नहीं किया है नोट्स में। इससे कैसे मिलेगा T inverse is continuous and it's a bijection. यही होता है जब आप ऑर्गेनाइज नहीं होते। ठीक है, इसलिए मैं इसको यहीं पे छोड़ूंगा। इसमें 2-3 लाइनें हैं जो आर्गुमेंट मुझे क्लियर नहीं है क्योंकि मैंने लिखा है इससे साबित होता है कि T इनवर्स कंटिन्यूअस है और ये बाइजेक्शन है। That's bad. इसका मतलब T इनवर्स इज बाउंडेड बिलो। मैंने तो पहले ही माना होमोमॉर्फिज्म। ओके, मैंने माना ये कंटिन्यूअस है। T स्टार इनवर्स looks like this. T इनवर्स कहाँ से आएगी? लीव इट, इसको कल करेंगे। ओके, एक्चुअली ये पुराना एक रिजल्ट था जो मैंने सोचा था इसको हम रहने देंगे, मतलब रहने नहीं, मतलब इसको करते हैं। तो एक हिस्सा इसका जो डिफिकल्ट पार्ट था जिसमें ओपन मैपिंग थ्योरम था वो तो खैर हमने कर लिया, लेकिन इजी वाला पोर्शन जो है हम कल करेंगे। मुझे लगता है हम जाते हैं अब अपने दूसरे की तरफ। दैट्स वो क्या है अपना, यस, वी स्टार्ट थोड़ा यूनिट 4 का पहला कुछ करते हैं शुरुआती काम। जो पहला रिजल्ट है यहाँ पे वो ये है कि every separable Banach space is linearly isometric to a quotient space of L1. So let me write down the theorem. Every separable space, no, I should say Banach space important. Separable and a complete होनी चाहिए, is linearly isometric and it preserves its linear isometric structure and a metric और सब कुछ preserve होता है to a subspace of ऐसे ही लिखो subspace to a quotient space of L, to a quotient space of small l1. Small l1 तुम्हें पता है, what is small l1?
These are summable sequences. So small L1 is the normal linear space of summable sequences. Xi belongs to our field K, and of course summation Xi in mod is less than infinity. Okay, इसका जो norm है, as you know, norm x1, you just take the sum, that's its norm. I runs from 1 to infinity. तो ये हमारी L1 normal linear space, it's a Banach space of course. तो हम कह रहे हैं कि कोई भी separable Banach space हो, तो you can always find a subspace of L1. तो एक subspace ले सकते हो L1 की, closed subspace of course, such that, let's call it Y, such that X is isometrically isomorphic and it preserves its linear and norm structure with L1 quotient Y. We can find a subspace of Y such that this is true always for any separable Banach space. So that's interesting. The important result है कि ये inside रहती है, मतलब इसका हर एक separable space का L1 के साथ connection है. And separable space means it has a countable dense set. So let X be a separable Banach space. A Banach be important. Separable Banach space, and let Xn be a dense subset, n runs from 1 to infinity, be a dense subset of Px. Px का मतलब तुम्हें पता ही है, it's all x belonging to x such that norm x is less than equal to 1. यानी यहाँ पर मैं ये यूज कर रहा हूँ कि every subset of a metric space, ये metric space के लिए जो होगा कि जो तुम्हारी होम असाइनमेंट होगी ये every subset of a separable metric space is separable. अब चूंकि bx जो है वो सबसेट है किसका, of a separable Banach space, so there would be a dense subset of bx. मेरे कहने का मतलब है bx would also be separable. So what we do, we define a map. Define a map T from L1 to X by T sub Y is equal to, or should I use the language of the book जहाँ से हम कर रहे हैं, जो उसने Y के बजाय लिया है Z is equal to summation Zi Xi I runs from 1 to n. यानी Xi जो है वो ये वाला dense subset है और ये जो Zi's है is Zi's हैं, they are the components of Z. लिख देते हैं ठीक से, where this Z, I don't know, it's pronounced as Z, I think, doesn't matter actually. Okay, yeah, infinity, yeah, of course. So this is a summable sequence. The question is it well defined? यानी ये कोई vector है, नहीं, it should be a vector in X, and it should make sense, it should be meaningful, and it should have a limit as well. It should be limit of some convergent set of sequences in X, otherwise it's not defined. But वो हम कर सकते हैं. Why? चलो मैं लिख देता हूँ. Note that just a minute. Note that if I take this, ये important point होगा, I xi in norm, I runs from 1 to infinity. This would be less than or equal to these are numbers, these are vectors, and चूंकि ये less than equal to 1 है, so this would be less than equal to summation
और चूंकि ये 1 ये बिलोंग करता है L1 में, तो it means this is less than 1, so it's finite, right? Okay, नहीं, it's equal to 1, sorry मैं क्या कर रहा हूँ, finite less than 1 नहीं है, वो less than 1 है ये exercise, so this is less than infinity, so I runs from 1 to infinity, I runs from 1 to infinity, यानी actually पहले this is less than equal to 1 for all i's, which is less than infinity, then you can take the sum, so means that this series is absolutely summable, that is summation z, इसको हम बोलते हैं absolutely summable, in norms ये summable है, I runs from 1 to infinity is absolutely summable and since x is a Banach space, silence एक कौन बात कर रहा है, and since x is a Banach space, it is summable. Okay, x is a Banach space, therefore it means meaningful, matlab summation I runs from 1 to infinity is actually a vector. Okay, हाँ ये तुम्हारा एक और होम असाइनमेंट शायद मैंने दिया था ये, if actually फंक्शन एनालिसिस 1 वालों को दिया था, यानी तुमने भी वहां किया होगा कि if x is a Banach space, x is a Banach space, actually this is equivalent to if summation xi is summable, summation xi is absolutely summable, implies that summation xi is summable. Look, we can use it as a definition of an absolute summability implies summable. This is equivalent to x being a Banach space. अगर Banach space है तो ये है, अगर ये है तो ये Banach space. Therefore, we can use this as a definition of a Banach space, that every absolutely summable sequence is summable in the Banach space. तो वो हमने यहाँ पे use किया Banach space का. So therefore, it is indeed this belongs to x. मेरे कहने का मतलब है ये जो मैंने यहाँ लिखा, this does lie in x. And furthermore, अगर lie करता है तो also should I write it like this? Also t of should I, चलो बाद में वो करेंगे. So t of psi, चलो यहाँ सिर्फ इतना लिख देते हैं, does indeed belong to x. We show that t of unit ball in L1, you have to remember that t is a map from L1 to x. We would show that it would send unit ball to unit ball, and it would be exactly equal to b of x. It would preserve the unit ball, which would mean that it would be an isometry. Anyway, so let this z belong to the unit ball BL1, right? It implies that norm of z जो है, one norm is less than equal to 1, which is the same thing as summation zi in mod I runs from 1 to infinity is less than equal to 1. And since modulus of norm of t of z is equal to, that's now तो हमने किया ही है, is less than or equal to, हमने ऊपर ही किया था, norm of z1 which is less than equal to 1. So therefore I can say t of BL1 is contained inside Bx. एक साइड से हो गया. अब conversely, अब इसमें हमें actually थोड़ा काम करना. Conversely, suppose that
x belongs to bx. तो हमें इसका उल्टा दिखाना होगा. Now let me okay. इसका ये. Now we choose a subsequence. We choose a subsequence from the countable set xn of bx as follows. तो इसकी एक subsequence लेंगे under these conditions. Now let norm of x be equal to, of course x अगर bx में है तो उसका norm 1 से या उसके बराबर होगा, लेकिन मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 by 1 plus delta where delta is greater than equal to 0. जब delta 0 होगा तो इसका नाम 1 होगा, अगर positive है तो ये this number would be less than 1. So I can write it in this manner, which implies that is then 1 plus delta into norm x जो होगा वो बराबर होगा 1 के, which implies further that 1 plus delta into norm x जो है वो belong करेगा bx में. अब मैं वो subsequence choose करूंगा. Now we choose let n1 belong to the set of natural numbers यानी उसका एक subset such that 1 plus delta into x minus x sub n1 is less than epsilon. Where ये जो मैंने epsilon है इसको मैं एक particular number लूंगा delta divided by 1 plus delta, एक positive number. So ये है इसमें मेन ट्रिक. तो मैंने एक xn वो मैं ले सकता हूँ because ये जो xn's हैं ये उनका एक xn's का एक उन्हीं में से मैंने एक member लिया, उसका मैंने नाम रखा xn1 which is arbitrarily close to any vector inside bx. तो then I can choose this where epsilon is मतलब arbitrary होता है, लेकिन तो मैं epsilon को ये particular value देके एक ऐसा member ले सकता हूँ इस sequence के, so that this is true. Now it implies that 1 by epsilon into norm of 1 plus delta into x minus x and 1 is less than 1, which implies that 1 by epsilon into 1 plus delta x minus x and sub 1 जो है ये belong करता है bx में. Again I can find another one. So ऐसा करते करते तो we can choose n1 and 2 belonging to the set of natural numbers. तो एक और मैं ले सकता हूँ इसका member मतलब sequence, उस sequence का member such that 1 by epsilon into 1 plus delta, ये ना जो ऊपर था vector minus x n sub 1, sorry ये x है यहाँ पे, x अपना original x है, minus x n sub 1 minus x n sub 2 in norm is less than epsilon square, right? Which implies that 1 plus delta into x minus x n sub 1 minus epsilon times x n sub 2 is less than epsilon cube, which implies that 1 by epsilon cube into 1 plus delta times x minus x n sub 1 minus